Hi Ashutosh, welcome back to Monaris. You had a hair transplant with us last year. So tell me, how was your experience at Monaris? Different from last time. I guess whenever I see the glass, I always think that I'm looking very different from last time when I got this hair treatment, and I'm really enjoying my new hairstyles now Why you felt that why you should go for a hair transplant? because I was feeling very like whenever I saw my hair, it's looked like there is no hair in front. So yeah, I was thinking that let's do hair transplant and looks a bit different from whatever right now I have. Overall, पूरा experience of your hair transplant means when you decided कि you want to go for a hair transplant और उसके बाद पूरा transplant आपका experience कैसा रहा? बहुत अच्छा था वो आपका फैसिलिटीज जो आपने दिया मुझे और जो आपका टीम है बहुत ही प्रोफेशनल है मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग के साथ काम करके एंड बहुत ही इजी गोइंग में हो गया सब चीज़ें तो मेरे लिए बहुत अच्छा था इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस विद क्या आप स्केप्टिकल थे कि आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसमें कोई रिस्क हो सकती है, इस तरह का कुछ था आपके मन में? नहीं मैं बहुत डाउट में था कि कुछ भी आप करते हो किसी भी चीज़ में तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होता ही है बिल्कुल। वॉट एवर यू आर डूइंग सोचता था फिर मैंने मूड बनाया कि नहीं few players also suggested me about your clinic and about you as well. Very good doctor for this thing. So I finally managed to do this treatment. ऐसे क्रिकेटर आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया, बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए है या ये बहुत नॉन अफोर्डेबल है। क्या आपको लगता है कि अगर कॉमन पर्सन भी इसको कराता है तो उसको ठीक लगेगा? आप बिल्कुल डिफरेंट ही दिखते हो होने के बाद ट्रीटमेंट होने के बाद आफ्टर 6 months ऑफ द ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट लुक होता है आपका और आपका फेस भी अलग दिखता है आपका हेयर स्टाइल भी अलग दिखता है तो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल अगर उनको डाउट है तो डाउट खत्म करें और आपके पास आए ट्रीटमेंट के लिए As a cricketer, you have got a very busy schedule. So after transplant, how was your recovery? How soon you were able to play cricket, and how soon you are able to meet more people? I guess after 4 weeks started my training, started my practice और it was not that hard सर्जरी हुआ उसके बाद में इतना कुछ हार्ड नहीं था नॉर्मली था बस 10-15 दिन आपको रेस्ट करना होता है एंड इट विल बी ऑलराइट आफ्टर 4 weeks तो 4 weeks के बाद मेरा जो डेली रूटीन था मैं स्टार्ट कर दिया था Okay. Did your family, friends and colleagues notice the change in you? of course everyone noticed सबको अच्छा लगा बहुत और दिखने में भी अच्छा लगता है स्टाइल तो सब लोगों ने तारीफ ही किया आशुतोष, आप इंदौर से हैं और आपको पता है कि मोनारिस क्लिनिक इज देयर इन इंदौर आल्सो. You have visited there. How was your experience at Monaris Clinic Indore? Like I told you before so that your team is too professional और उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है because all are very polite and सब लोग मीन्स उनका जो काम है वो बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग जब भी हम आते हैं हम लोग को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है वो क्लिनिक भी आपका इंदौर का और मैं चाहता हूँ जब भी तो मुझे अच्छा लगता है Great. Thank you, Ashutosh. थैंक यू Thanks. We'll make sure that you have good hair always. थैंक यू Okay. Thank you.